Look at this question here. Use the suitable identities to find the following products. So these identities we have discussed in the previous class. So now let us apply that identities on these questions. It is x plus 4. The first part is x plus 4, x plus 10. So it can directly can be solved. This x can be multiplied with this total bracket, right? So x multiplied with this total bracket, it can be written as x plus 10 like this. Then in the next step, this 4 multiplied with this total bracket plus 4 multiplied with the total bracket, then it can be written as x plus 10 like this. Now open the bracket, it can be written as x square when this x multiplied with this x, और ये x इस 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, it become 10x. This 4 multiplied with this x and this 4 multiplied with this 10, so it can be written as 4x plus 40, right? Now it is x square plus this 10x plus 4x can be written as 14x plus 10. So like this, this is the product. This is the product of these identities. Now let us solve the second part here. In the second part, the same process we have to apply. Sir, but in the first part, we have not used any identity. Okay. So let me use the identity here. So if you look at this, this is the simplification as direct we have opened the bracket. And if you want to solve this by using the identity, so we have an identity here, x plus a and x plus b. So we have this identity and it can be written as x square plus a plus bx plus x square a plus bx plus ab. So this is the identity here. So now we have to simplify this with the help of this identity directly, right? So what is a in this case? The a in this case is, if I write like this, if I write the expression here x plus 4, x plus 10, we have to simplify this. So if you compare it with the above identity, the a is 4 in this case and b is 10 in this case. So now replace a and b with 4 and 10 here on this side. So it can be done as x square plus, at the place of a we can write 4 and at the place of b we can write 10, right? x plus, then a की जगह पे 4 पुट करेंगे और b की जगह पे 10 पुट करेंगे, right? So then we will get the answer here, x square plus 14x plus 40. So this is the answer in this case. So it is same. If you look at these answers in both the cases, it is same. So this is the general method by opening the bracket, and this is the solution of this question by using the identity. I hope this question is clear to you. Yes, sir. Now look at the second part here. Yes, sir. If you look at the second part, let me explain the second part to you. It is x plus 8, x minus 10. So in the second part, let us use an identity here, x plus a and x minus b. So what is this identity is x square plus a minus b x minus ab. So we need to use this identity here to simplify this expression, right? Now use this identity here. It is what is given in the question. It is given x plus 8 and x minus 10, right? So what is the value of a in this case? 8, and the value of b is 10. Now put the at the place of a and at the place of b, put the values here. At the place of a, put here it is 8, and at the place of b, put here it is 10. Here also 8, and at the place of b, put it as 10, right? And all the remaining terms as it is. So x square plus a minus b x minus a into b. So the answer for this case is x square. 8 minus 10 is minus 2x minus 80. So this is the
simplification of this expression. This is the multiplication, right? I hope it is clear to you all. Yes, sir. Yes, sir. Now let me explain this third part to you. Look at this third part here. In this third part, we need to simplify it. So we have to use the same identity here. It is x plus a and x minus b. So the identity for this one is x square plus a minus b x minus ab. So now we are going to use this identity to simplify it. Now if you compare this identity with the given expression in the question is, it is 3x plus 4 and 3x minus 5, right? So what is x in this case? The value of x is 3x. The value of a is 4 and the value of b is 5. So now at the place of x put 3x, at the place of a put 4 and at the place of b put 5 on this side. So x की जगह पे क्या रखेंगे? 3x square. What is a? A है 4. What is b? B is 5. And what is x? At the place of x, it's 3x minus what is a? A is 4. What is b? B is 5. So now let us simplify this. It can be written as 9x square, 5 minus 4 minus 1 and 5 for the 20. So this is the simplification of this part. I hope this part is clear to you. Yes, sir. Yes, sir. Now look at this next part here, the fourth part of the question. If you look at the question here, y square plus 3 by 2, y square minus 3 by 2. So we need to apply this identity here, x plus a, or we can say that x plus y and x minus y. Let me write it in the form of AB. So there's an identity here. The identity is a minus b and a plus b is equal to, it can be written as a square minus b square. So this is the identity, a square minus b square. So let us apply this identity here in the given expression. So what is the value of a given in the question? So a is equal to y square. If I write it plus here and minus here, then it is easy to compare it. A plus b and a minus b like this, right? What is the value of b here? The b is 3 by 2. What is a? A is y square. And what is b? B is 3 by 2. Now use this identity here to simplify this expression. So it can be written as, at the place of a, what is a? Y square. So y square and it is a square. So at the place of a put y square, a की जगह पे y square put कर देंगे और b की जगह पे b कितना गिवन है? b गिवन है 3 by 2. तो b की जगह पे 3 by 2 पुट करेंगे and its square is there 3 by 2 whole square. Now it comes out to be y power 2 into 2 4, 3 3 is 9 upon 4. So this is the final answer in this case after multiplication by using the identity. I hope it is clear to you all. Yes, sir. Okay, now let us solve one more part based on this. Based on this identity, look at this part here. So based on this identity, it is 3 minus 2x, 3 plus 2x. So what is the identity we have? We have the identity is a minus b and a plus b. It can be written as a square minus b square. So this is the identity. Now compare what is a in this case. So a is 3 and b is 2x. A is 3 and b is
2x. So at the place of a put 3, a की जगह पे 3 पुट किया, and at the place of b put 2x whole square. So what will be the answer in this case? 9 minus 2 to the 4 x square. So this is the answer in this case. This is the simplification of this expression. I hope this simplification is clear to you all. Yes, sir. Yes, sir. Look at the question here. In the question it is evaluate the following product without multiplying directly. So without multiplying it directly, we need to find out the product of this. So what is the product of 103 and 107? Sir, 100 plus 3 whole into 100 plus 7. What? 100 plus 3 whole into 100 plus 7. Let us check it 100 with the plus 7. phone. Let me check it with my calculator. The product I have written is correct or not? No, sir, I'm not telling the answer. I'm telling how we'll do this. Yes, I understand it. Okay. So this is the answer for this question 11021. Sir, can I explain this question? Sir, Yes. 7 into 3, 7 3 21. और सर जी 0 का 0 लिख दिया सर, और 1 का 1 लिख दिया सर उधर का, है ना सर? और एक 1 आ गया. यस सर. ठीक है, अभी बताता हूँ इसको कैसे किया. मैंने डायरेक्टली कर दिया, मैंने कैलकुलेटर से बाद में मैच किया, तो डायरेक्टली मैंने कर लिया. सर कैन इज राइट है. ठीक है. 95 को मल्टीप्लाई करना है 96 से, तो आंसर आ रहा है 10. सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन में. Okay, look at this interesting thing. All of you pay attention for a 1 minute. Look at this. If you need to multiply these numbers that is nearby to 100. So I am telling you a trick here. I am going to tell you a trick here, right? So don't use this trick in your exam paper, and don't do it like this as I am saying. I am explaining this to you right now. I am saying this trick to you to match your answer after doing the questions. So we will look at the way how we solve it without multiplying it by using identity. We will discuss that thing also after this. So look at this on the screen. You enjoy this thing. ये कितना बड़ा है? 300 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो 03 लिखना है. ये 100 से कितना ज़्यादा है बताइए? 7 ज़्यादा है. अब आपको करना क्या है, इसमें 103 में 7 ऐड कर दीजिए. 103 में 7 ऐड कीजिए. 103 में 7 110. और ये 03 और 07 को मल्टीप्लाई कीजिए. 21. So this is the like this we can find out the answer. एक क्वेश्चन और बताता हूँ. सपोज 104 है और हमारे पास 105 है. So what will be the answer in this case is, मैं इसका डायरेक्टली आंसर इसका बता सकता हूँ आपको. इट इज 10920. नाउ लुक एट दिस, हाउ टू फाइंड इट डायरेक्टली. ये कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है. ये कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है. तो लास्ट की 2 डिजिट क्या आएंगी? इनकी मल्टीप्लीकेशन. तो 0405 4 5 20, राइट. और ये इसमें से ऐड करना है इसको. 104 में किसको ऐड करना है? 05 को. तो क्या आएगा? 109.
I hope you understood it. Yes, sir. Who And sir, said? if a number is like this 92 and 105. हाँ, आई एम कमिंग हियर, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। ये आप देख रहे हैं सेकंड एग्जांपल, इट इज जो 100 से नियर 100 से कम है, और ये देख रहे हैं ये 100 से एक ज़्यादा है एक कम है। आई एम कमिंग ऑन दैट, जस्ट वेट। अब देखो डायरेक्ट भी बता देता हूँ, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। जैसे 103 को 102 से करना है, तो अब देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं। 03 की 02 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर लिखने की जरूरत ही नहीं है। 06, राइट। और 103 में ऊपर वाले नंबर में इसकी लास्ट डिजिट ऐड कर दीजिए, 105। आया कुछ समझ? हाँ, yes, sir. जैसे अब बताइए 104 को, कोई बताइए 104 को 104 से मल्टीप्लाई करना है। टेल मी क्विकली। Sir, 108. 10816. 10816, yes, right. So like this we can multiply these numbers that is nearby to 100. We can multiply these numbers that is nearby to 1000 also, and we can multiply these numbers that is nearby to 10 also. जैसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, 12 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो देखो क्या होता है इसमें। इसमें 2 आएगा, 2 ज़्यादा है और ये 3 ज़्यादा है, तो 3 2 जा 6। इनको मल्टीप्लाई करना है, 12 + 3 15। यस सर, आ गया समझ में अब तो, बहुत बढ़िया वाला। ठीक है, अब आपको करना है 1003 को 1006 से। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, आप अगर एक पैटर्न देख रहे होंगे तो यहाँ पे 003 ज़्यादा है और ये 01 के बाद वाले डिजिट लेनी है सारी, 006 ज़्यादा है। तो देखिए कैसे आएगा, ये 1003 + 006 1009, इनकी मल्टीप्लाई 3 और 6 की मल्टीप्लाई 6 3 जा 18। सो दिस इज द आंसर 1009018। So why we have put 0 before 18? इसमें क्या करना है, देखिए जब 1000 लेते हैं तो 1000 के बाद ये तीनों डिजिट लेनी है, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स आएंगी इसमें, यहाँ पे इस प्लेस पे, राइट। और जब 100 के बाद लेते हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट्स आती हैं। अगर आप 100 के बाद देख रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे 04, तो हम लोग 04 लेते हैं। 100 के बाद 2 डिजिट्स आती हैं यहाँ पे, और इसके और जब ये होता है 1, तो 1 के बाद ओनली सिंगल डिजिट आती है, 3 2 जा 6। ये देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं। तो 1 के बाद वाली डिजिट्स हमें सारी लेनी है, समझ पा रहे हैं? जैसे कि एक एग्जांपल से बताऊं, 10006 को मल्टीप्लाई करना है 10003 से। हाँ, इसको चेंज कर देता हूँ 2 से, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, 1000 टू ऐड करो 8, और यहाँ पे क्या आएगा 0006 0002, तो 0012। So this is the number you can multiply directly, right? यस सर। I hope this thing is clear to you. This is the part of Vedic mathematics. ये आ गया तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, but you do not need to solve this question by this method. Otherwise, you will do not get any marks if you are using this method in the exam. So now let me tell you which method you have to follow in the examination to solve this question. I hope you all enjoy this thing. यस सर। Yes, sir, ये ट्रिक पहले पता पड़ जाती तो बहुत टाइम बच जाता। Okay, now come to the question here. In this question, we have to evaluate the following product without multiplying directly. So what will be the multiplication of this? Anyone could you please tell me? 103 into 107. Sir, 100 plus 3 whole into 100 plus. Its 7. multiplication is this. So directly we can find out it by Vedic mathematics. So, but we are not going to solve it here by using Vedic mathematics. In our syllabus, we have to use the identity. It is 103 107. So 103 can be written as 100 plus 3, and this can be written as 100 plus 7, like this. So now we have a formula here, x plus a bracket x plus b can be written as x square a plus bx plus ab.
So this is the identity we need to apply in this question to simplify it. Now let us apply this identity here. At the place of x it is 100, at the place of a it is 3, x की place पे 100 है, b की place पे 7 है. So on this side replace all these terms. x को replace कर दीजिए 100 से, a को replace कर दीजिए 3 से, b को replace कर दीजिए 7 से, x को replace कर दीजिए 100 से, a is 3 and b is 7, right? It comes out to be 1 0 0. 7 plus 3 10, 1 0 0 0 plus 7 3 is 21. So it can be written as 1 1 2 0 1, this one. So this is the answer in this case. So like this we can simplify it by using, this is the procedure you have to follow in your exam to solve this type of Sir. question, right? सर Yes. सर जब हम शॉर्ट से आंसर निकाल सकते हैं तो सर इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है हमें? सर हम उस ट्रिक से निकाल सकते हैं आंसर. That is the part of Vedic mathematics and it is not in our syllabus. जो हम लोगों का syllabus है वो Vedic mathematics नहीं है, वो mathematics है, NCERT का mathematics है, इसलिए हम लोगों को यही मेथड करना पड़ेगा. ओके. इस मेथड को रोक रखा है यहाँ से. रास्ता नहीं होता कोई, ऐसे दो रास्ते होते हैं किसी जगह पे जाने के. एक बहुत शॉर्ट रास्ता होता है, एक रास्ता बहुत बड़ा होता है, घूम के आना होता है. तो हम लोग उस शॉर्ट रास्ते पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो रास्ता उन्होंने बंद कर रखा है. वो वैदिक मैथमेटिक्स का रास्ता है तो वो रास्ता बंद कर रखा है. हमें ये लॉन्ग रूट ही लेके आना पड़ेगा बिकॉज दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस. वैदिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी सिंपल मैथ्स पढ़ रहे हैं. तो आप उसको आंसर मैच करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट? अभी मैं आप लोगों को ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. कोई मुझे रिमाइंड करा देना कि 95 को 96 से, तो मैं चलो बता देता हूँ. 95 को 96 से, अगर ये 100 से कम है नंबर, तो ये नंबर कितना कम है 100 से? सर 5 और 4. ये 100 से 4 कम है. और ये नंबर कितना कम है? 5 कम है. सॉरी 5 कम है. ये नंबर कितना कम है? 5. 4 कम है. ये 96 तो 4 कम है 100 से, और 95 ये. तो अब इसमें क्या करना है आपको? द फर्स्ट स्टेप इज सेम. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 0504 20, राइट? अब उसमें क्या करते थे, वो 100 से ज्यादा होता था, यहाँ पे 100 से कम है, तो 95 में से 94 को माइनस करना है. सॉरी 95 में से 4 को माइनस करना है. तो द आंसर इन दिस केस इज 9120. और जो माइनस करने का मैंने आपको यहीं से इस तरह से बताया, इसको इससे करना है, तो आप या तो इसको इससे कर लें या आप इसको इससे भी कर सकते हैं, इस वाले को इस वाले से. तो 96 को अगर आप 5 माइनस करेंगे तो आपको 91 ही मिलेगा, राइट? आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर. इफ द नंबर इज लेस देन 100. Yes, sir. Now let me explain this question to you. Look at this question here, 95 into 96. How to solve this question? This 95 can be written as, so the answer for this question we can solve it by directly by Vedic mathematics also, the technique I have told you. So if you multiply 95 into 96, so the answer in this case is 209120. So now let us solve it with the traditional way, the method which we have to follow. It is 100 minus 5 and it can be written as 100 minus 6, right? So we have to solve it by using the identity. So it is x minus a and it is x minus b. So what is this identity here? Identity is x square minus a plus b x, A minus B. a plus b x plus ab. So this is the identity. You must remember this identity to solve this question by using the identity. Now what is x value here? X is 100, a is 5, x is 100 and b is 6. Now let us put all the values here. x की प्लेस पे 100 पुट कर देंगे, a की जगह पे 5 और b की जगह पे 6. x की प्लेस पे 100, a की जगह पे 5 और b की जगह पे 6, राइट? इट इज 1000 minus 6 5 30,
6 plus 5, sorry, 6 plus 5, 11, 0, 0, and it is 6 5s are 30. Okay, now it comes out to be 1 0 0 3 0 minus 1 1 0 0, and it comes out to be, if you subtract it, 0, then it comes out to be 3. सर आपका फोन रिंग कर रहा है. Okay, it's time up, class time up. That's it singing to move the next class. Oh, the 3 great idea. 3 and so it is 1 9. So 6 5 are 30, right? There is a mistake in this question. आप इसको देख सकते हैं कहाँ मिस्टेक है, बताइए. 95 की जो मल्टीप्लाई है 96 से, ये आएगी 100 minus 4 होगा. Yes. हाँ ठीक है, ये 100 minus 4, ये मैंने यहाँ पे 100 minus 6 लिख दिया. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 9th class we were discussing in the previous class. Okay.